Very good evening to all of you. On behalf of Auditing and Assurance Standard Board of Institute of Chartered Accountant of India, I welcome you all in today's webinar on audit conclusions and reporting. As we all are aware that the topic is very important and very vast, which covers SA revised SA 700, SA 701, revised SA 705, revised SA 706, SA 710, revised SA 720. That means there are many standards in this series where we have to give the audit report under various auditing standards. So in order to tackle this very important aspect of audit reporting, we are having with us from our own chartered accountant fraternity, CA Sarika Gusin ji. So on behalf of AASB of ICI, I extend welcome to you, ma'am, on this AASB webinar. Namaste. I also welcome all the participants of today's webinar. Before we formally start, I would like to introduce the profile of today's learned speaker, Sarika Madam. Sarika ji is a chartered accountant and company secretary and also hold a diploma in IFRS from ACCA UK and BRSR from Institute of Chartered Accountant of India. She has got around 20 years of post-qualification experience. Currently, she is heading the technical function of Mazars in India and also leading firms ESG and sustainability practice. Her current responsibilities include technical research, advisory, and L&D initiatives of the firm. Her past experience includes servicing large clients in the areas of audit, accounting, and advisory. On professional front, she has co-authored two books on and also speaks on couple of forums. She also keeps talking up a couple of educational projects with ICAI. She has taken many webinars, many physical lectures, physical seminars, as well as virtual CP meetings on various platforms of Institute of Chartered Accountant of India. So without wasting much more time, I request our today's speaker, C.S. Sarika Gusenji, to please enlighten all of us on various intricacies as well as various methods of audit reporting under various standards on auditing. Over to you, ma'am, please. Yeah, thank you so much for the kind introduction and giving me the opportunity again to speak on a forum which is always my first priority to speak upon. And accounting and auditing has always been my first baby because I've been practicing accounting and auditing for past 21 years. So though I have ventured into ESG and sustainability, and some of you and few of you might have seen me speaking on ESG and sustainability, but this accounting and auditing has always been near to my heart, and I always wish to explore new things and explain and discuss my thought process on these topics. And today's very important and witty because as and when we start taking up any assurance engagement, many a times it happens that we look at only those standards which are important for that particular assignment, and we at times miss to look at the entire set of standards or situations from a macro level. At times we land up in a different horizon altogether. So just to give you an example, if you have to go to Delhi and you ride a different bus or any other vehicle, you will end up going in a wrong direction, and we will end up wasting our time taking a ride back from that place and going to the right direction. Therefore, it is imperative for all of us to really understand what all rides to take when we are doing any of the test function. So if we do not use the right standard or the guidance note, we will not be able to apply the required number of required amount of so can you please confirm if participants are able to see this webinar, because I think there is some technical glitch. Ma'am, participants are there. I would like to ask our technical team to help you in this some setting of this PPT. Mr. Himil, please help, ma'am. Middle, there is a show tasker display setting. Yes.
Anjali. Is Now it fine. fine now? Yes, yes, yes. Yes, madam. And also just confirm if they're able to listen to me, because one of my colleagues said it is still showing stay tuned. हेमल जी चल रहा है, आप अब दूसरी जगह देखिए, काइंडली प्लीज चेक. Okay, Yes, that's ma'am, good. fine. Please, thank you, ma'am. Okay, so I will continue. Thank you so much, and sorry for the interruption. So as I was mentioning that to reach to the rightest conclusion or the reporting, we have to make sure that we are lending in the rightest standard or the guidance note. Because if we look at that, we as professionals or chartered accountants spend a lot of time while we do audit or review or any other assignment of our clients. But if the most important part, which is audit conclusions and reporting, if that is only not correct, then it's like that we prepared for the exam for the entire year and we did not appear for the right examination, or we did not write the exam at all. Therefore it is very very important that we look at the right test standard, the right guidance, the right procedures, and the right format. And we understand all these when we look at these from the macro level together. So the idea of today's session is not to take you through a particular standard or guidance note in totality, but to give a very high level overview, as if you have a Google view from the upper side, to look at the buckets, what all buckets are available. We would try to touch base some of the critical aspects of certain standards in terms of the comparative analysis also, that if this is the situation, this is the relevant standard. If this is the situation, this is the most relevant standard, and stuff like that. But we will not touch base any standard in detail, because that's not the objective. And at certain places you would feel that it's being too much in one session, but please understand the objective of today's standard, and we will be sharing the presentation with you as well. So when you are confused and you want to go back and see which situation demands which standard or guidance to be used, you can use this as a guiding presentation for you to look at which is the rightest standard. So in today's agenda, we have divided all our standards, which we will be touching base in 4 parts. So the first one will be the series of 700, which is 701, 700, 701, 705, 706, and 800, 805, 810, 2400, 2410, which are auditing, review, and other standards. Then we will be understanding assurance standards other than review standards. And lastly, we would understand the guidance notes which are used for different types of test functions and certification. So as I said, I'm sure in recent past you might have underwent detailed seminars or webinars on certain, as if I was looking at one on special purpose guidance note on special purpose engagements, etc. So as I said, we will not be touching base on each of them in detail, but what we would really be covering, what is the applicability of the particular standard, what are the frameworks which are available, and the illustrations which are given. I keep saying, I've always said, and I'll keep saying going forward as well, we as professionals have to undergo and have to teach ourselves so much of guidance every day that remembering everything word by word is very difficult. So what is of utmost importance is that we should know what is available, where it is available, and how to use that guidance. If we reach to that triangle, that means we reach to the best of our abilities. So as I said, the objective of today's standard is to assess and see where we have to lend ourselves, which standard to use when. So first of all, this is the mother standard, I must say, and I keep saying, for any auditing requirement when we perform an audit. So if we look at the applicability, this applies to the basic
auditor's report on the financial statements, and this guides us for the form and content of the auditor's report. My only request is, as and when you feel, because I'm from science background, and at later date or some other time we'll discuss about financial statements and commerce. I switched so retention for a certain period of time, but if we write it from our own hands, the pen increases because that gets registered here for a very longer time. So my request is, if you could take a quick note, because we will be covering a lot of standards, not in detail though, but yes, we would be touching base. So towards the end of the session, you might feel कि कुछ खिचड़ी बन गई है, and we have read so many standards, and उस standard में क्या था और इस standard में क्या है. So if you keep writing a gist of it, SS 700 that is applicable for a main general purpose financial statement, SS 701 talks about CAM, etc., etc. So while you will be towards the end or even post the session, you would be able to remember what is there and what we had. And trust me, if you go by that method, there will be a lot of take home for you. It takes a lot to prepare these kind of presentations, because for a 2-hour session, we have to study. Anybody would have to study at least for 20 hours, because while you are compiling, you have to make sure whatever we are compiling is accurate and complete. So I've tried my level best with my team to combine or compile the information to the fullest and to the extent possible. So please make use of this time. This is for you, and we will make use of it to increase the quality of our reporting in assurance standard. So as I mentioned, this is the mother standard for reporting, which is applicable. And this standard throws the form and content of the auditor's report. And this is generally applicable for general purpose financial statement. So let's spend few minutes here, or rather few seconds, to understand what is general purpose financial statement and what is a special purpose financial statements, framework rather, because we will keep hearing this going forward multiple times during the session. So general purpose framework is when that framework which allows you to use those financial statements or set of financial statements which can be used for any purposes, can be submitted to anybody, to any authority without any permission of the issuer. So general purpose financial statements, the classic example is my companies and financial statements, which are generally issued though for ROC and MCA purposes, but these are globally accepted financial statements where, unless it is required in a different format or for different purpose, it can be used for any purpose. So if, as I said, the format would be, we will discuss the applicability, we will discuss the framework, and then some of the illustrative formats. So the illustrative formats which have been provided here are, and it's very important for us to understand what all types of model formats are available, because whatever has been provided by ICAI or anything which has been issued by ICI as a guidance, so it's the best thing for us to refer to, because nobody can challenge. So the illustrative format is given for listed entity where fair presentation framework. Many a times, most of the people are confused between and amongst general purpose framework and special purpose framework, which I told. And this is fair presentation framework. I just explained what it is once we see the illustrative formats. Then we have a consolidated financial statements for a listed company, which is prepared again in fair presentation framework. For an auditor's report, if it is of unlisted company, then again a fair presentation framework. Then auditor's report for a non-corporate entity, which is prepared in accordance with fair presentation framework. So one is general purpose financial statements and special purpose financial statement. That's a different thing which I just told you. You will get to see fair presentation framework and compliance framework. So I'll explain it here also, and I'll keep explaining a couple of times in middle so that we remember that well. So as I mentioned, general purpose financial statements or special purpose financial statement. General purpose financial statements are those which are
used and which can be used for any purpose, and special purpose financial statements are those which are specifically prepared for some regulatory body or some specific purpose. For example, my tax financials, if I prepare, which are prepared using some adjustments to the ROC financial statements, those are special purpose financial statements. If I prepare any financial statements pursuant to any regulatory requirement, those are special purpose financial statement. Now talk about presentation framework. So fair presentation framework and compliance framework. What is fair presentation framework is? Fair presentation means while we are issuing the report as per and we get to write true and fair view. You might have seen multiple times. So as and when we write true and fair view in accordance with that framework, that is a fair presentation framework. The beauty of the fair presentation framework is that apart from the framework it is prepared in, the company has or the auditor has more liberties to give or use other disclosures as well. However, if I talk about compliance framework, which is largely driven from any rules, regulations, or set of regulations, then the auditor has to state that whether the financial statements or the set of financial statements are prepared in accordance with, in compliance with that framework. And the company has a very little liberty to add more notes or disclosures in the compliance framework. So in net, fair presentation framework when auditors write true and fair view, compliance framework when we write the financial statements or the set of financial statements are prepared in compliance with that framework. Hope I am clear, and I'll repeat it once required. So one more example we have here is the auditor's report the auditor's report on the financial statements of a non-corporate entity, which is prepared using general purpose compliance framework, as I just mentioned. So these are different types of illustrative formats which are given under SS 700 and can be used as and when required. So why we are discussing this, you may not need it immediately, but when you need those, actually you can remember that yes, these are available and we can confidently use those. So I just repeat, 700 is the mother standard which is used for the reporting purposes, and it has got different types of reporting formats for listed, unlisted, and non-corporate entities, both for fair presentation as well as compliance framework. You might get one combination where it's a listed entity, and in place of fair presentation framework you get to use the compliance framework. So a mix of illustration number 1 and 5 might help you to make that mix, but that needs your judgment and intelligence and understanding that how to mix those, so that the requirement of the illustration 1 and illustration 5 can be used. And since these are not exhaustive being illustrative format, we have to apply our judgment and have to apply our mind how to combine these. Many a times you might also feel that the required kind of illustration is not given in the illustrative format. Then you have to go back to the standard, read the guidance, and you have to frame yourself. Therefore, it is very important to at least know the right standard or the guidance which needs to be used. If I have to use 700 and I'm using 705 or 706, that means it's the same I am riding in a wrong bus. It will definitely take me to the wrong destination. Moving towards the next standard, which is SS 701, that is communication of CAM. Needless to say, I'm sure by now everybody would know what is CAM. Just to give you a brief, again, as refreshing a memory, CAMs are important matters or significant matters which requires auditors' judgment to report. Because people generally ask who are not from financial background that for companies like Infosys or big names to quote, the audit teams work entire year, they issue quarterly reports, etc. But we always get to see a clean report every year, and you always write the company's financial statements give true and fair view. So what is the benefit of doing audit for the entire year? पूरे साल में कोई ऐसा मैटर था ही नहीं जो
critical हो या company ने कभी कुछ गलत किया हो. So this key audit matter is answer to that. It is not possible and it cannot be possible that any company of any size might not have any significant matters where the auditors might have struggled to collate the information and to report thereupon. So the key audit matters really tells us what was the criticality involved and how the auditors proceeded to get comfort on those matters, which led to the conclusion that the company's financial statements give true and fair view. So those are of significant importance in the auditor's judgment that needs their attention. So what is the reason of understanding this? Why we have to give the clean report? So there is a specific section which has been added on key audit matters where the auditors have to describe that what are the critical matters, how they have addressed, and how that report came out to be the clean report. That process, the entire documentation and reporting thereof is CAM. So this standard deals with the situation, what all matters can be CAM, how to identify, how to report it to those charged with governance, etc. So this also applies to, this is generally, as I mentioned, these are applicable for general purpose financial statements. But if the auditors wish to give it or any law regulation requires to report CAM, they can do that. So the illustrations which are given in that are, I think, are not given. There is an implementation guide which gives the different types of illustrations for 701. We may want to read through that. So the next standard, which is very important, is SA 705, and that deals with the modification. One important point I would like to mention here, and I'm sure most of you would know, but just for my own satisfaction, I would like to reiterate. I was talking to somebody and a professional, and he was saying emphasis of matter covered under modification. So I would like to reiterate, emphasis of matter and other reporting are not part of modification, though they are by definition are not covered, and they are also dealt with within a separate standard, which we will understand after this. So this standard SS705 only talks about the modification, which are qualifications, adverse opinion or disclaimer, etc. And it also applies to general purpose financial statement. And in terms of the illustration, what all kind of illustrations are given, I would again like to reiterate, it is not an exhaustive list. It is not the exact way which might be required to be reported. You have to make the best use of these financial formats, and you have to make suitable modifications. So please do not go by my words that these are model financial statements and can be applied in all the situations. You have to apply your judgment. You have to read through the entire guidance, and you have to understand your situation, how your situation is fitting into the standard model formats. As I mentioned, and as I said, you might have to apply a couple of standards and combination thereof to reach to the desired format. So the first format what they have given is the qualified opinion, which is regarding the material misstatement. So as I mentioned, I'm not going to talk about what do we mean by material misstatement, what do you mean by qualified opinion, when to give qualified, when to give disclaimer, when to give adverse opinion. I am not going into that nitty-gritties because I understand from the organizers that in bits and pieces and as a series, these standards have been covered in detail very beautifully. My objective and the responsibility which is given to me is to combine everything and to give an overview where to go, when to go. So the second report which is given is adverse opinion, and it relates to, again, material misstatement, but in CFS. Then we have qualified opinion, which talks about inability to obtain sufficient appropriate audit evidence regarding a foreign associate. So here the example has been given for foreign associate. It can equally be used for an Indian company, which is a subsidiary or an associate, etc. So the idea of giving these illustrative format is to have a diversified examples
which you can fit in your own case. So while we are, taking reference and copying from these standard, please do not forget to make the appropriate changes as per your requirements. It also gives an example of disclaimer where the auditor is unable to obtain the audit evidence about a single element of CFS and or multiple elements of financial statements. So again, they have given mix of different examples which can be used. Now we are moving to another standard, which is again within the series of main reporting standard, SA 700 ka series jo hai. So again, it is applicable, and after the introduction of CAM concept as per SA 701, which we just spoke about, this SA 705 and 706 was largely changed to depict the interaction and giving examples and concepts, when to use EOM, when to use other matter paragraph, when to use CAM, when to use uncertainty paragraph related to going concern. So ये 4 चीजें हैं जो बहुत important हैं जब key audit matters का concept introduce हुआ था in recent past. All of us, including myself, were largely confused. कहाँ पे CAM देना है, कहाँ पे going concern का EOM देना है, या going concern का material uncertainty paragraph देना है, या कहाँ पे हम other matter paragraph दे, कहाँ पे qualification दे, कहाँ पे clean report दे, कौन सी चीज किसके बाद place होगी. So ये जो मेरे basic standards हैं, these are 700, 705, 706 and 701. These underwent changes to accommodate the requirements with related to each other, and I missed to mention SA 570 as well. So these together gave us a comprehensive picture of the guidance कि कौन सी चीज कहाँ आएगी और कैसे auditors report में place होगी. If I may take you back to the basic standard, which is SA 700. So the reporting pattern of the entire report used to be very, very different before introduction of SA 700 revised, जहाँ पे मेरा management paragraph सबसे पहले आता था. So उसके बाद auditor's responsibility and then everything else used to follow. But अब हमारा जो standard का format है, वो पूरा standard के reporting का format एकदम change हो गया है. And we have the opinion paragraph first and then everything else follows. So बहुत सारी चीजें, अगर मैं इन 4 चीजों की बात करूं, opinion paragraph, going concern, material uncertainty, CAM, और EOM और other matter paragraph, बहुत सारी चीजें स्टैंडर्ड्स ने फ्रीज कर दी है कि आपको ओपिनियन पैराग्राफ सबसे पहले देना है, ओपिनियन पैराग्राफ के बाद आपको गोइंग कंसर्न का मटेरियल अनसर्टेनिटी पैराग्राफ देना है. बट कॉम्प्लेक्सिटी तब आती है जब आपका कैम भी है, अदर मैटर पैराग्राफ भी है, EOM भी है, आपका गोइंग कंसर्न का मटेरियल अनसर्टेनिटी भी है, आपकी कोई क्वालिफिकेशन भी है, हो सकता है किसी एक कैप्शन से रिलेटेड आपका कुछ और तरह का रिपोर्टिंग भी हो. देन how to write, where to place that paragraph. So as I mentioned, बहुत सारी चीजें तो फ्रीज कर दी हैं स्टैंडर्ड्स ने कि इसके बाद ये आएगा. But at certain places they have given a choice and the liberty and the leverage to the auditor कि आप किसके बाद क्या रख सकते हैं. And the judgment lies only on the importance in the eyes of the auditor. So जहां पे उन्होंने लिबर्टी दी है आपको कि आप ये वाला कैम पहले रख सकते हैं या ये वाला EOM पैराग्राफ पहले रख सकते हैं, वहां पे we have to apply our professional judgment, what carries more importance, right? ये कैम ज्यादा जरूरी है पहले देना या EOM पहले देना जरूरी है. बस वो एक टच स्टोन हमें याद रखना है जहां पे लिबर्टी दी है. लेकिन अगर आप मुझे बोले कि ओपिनियन पैराग्राफ को सबसे लास्ट में ले जाओ, देयर इज अ बिग नो. That is not acceptable by the standard setters. So बहुत सारी चीजें जो frozen है, जो जहां पे आनी है वैसे आनी है. रेगुलेटरी सेक्शन मेरा बाद में आएगा तो आना है. रेगुलेटरी सेक्शन से पहले मेरा गोइंग कंसर्न का जो पैराग्राफ है वो आना है तो आना है. अदर मैटर पैराग्राफ बाद में आएगा, EOM पहले आएगा. लेकिन जहां पे जो मुझे लिबर्टीज दी है, तो आपको सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है, यू हैव टू सी द इम्पोर्टेंस ऑफ द हायरार्की. जो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ऊपर, और जो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वो नीचे आएगी.
Framework, again, general purpose framework, we have to use this guidance for. If I talk about illustration, so illustrative format मेरे unmodified opinion है, जहाँ पे material uncertainty है, going concern से related, key audit matters है, या EOM paragraph है. अब as I was mentioning that generally जो going concern का paragraph है, that is driven through SA 570. Please bring back your energies and listen to me carefully here, because people are confused कि going concern में EOM कैसे हो सकता है, क्योंकि going concern का तो standard अलग से है. So I just try to elaborate, though it's not required, but I thought to elaborate because that is something very crucial. So if it's a listed company, right? If it's a listed company and there is an uncertainty related to going concern paragraph, or even if it's an unlisted company, so अगर चाहे company listed है या unlisted है और uncertainty है, material uncertainty है, that will be driven through SA 570. Am I clear? Second step, if it's a listed company and going concern अगर वो CAM बन रहा है, so going concern CAM कब बनता है, जब closed call होती है, I'm sure आपने पढ़ा होगा. So अगर वो एक लिस्टेड कंपनी है और गोइंग कंसर्न मैटर है जो क्लोज्ड कॉल है, वहां पे आप कैम देंगे. लेकिन अगर वो एक अनलिस्टेड कंपनी है और क्लोज्ड कॉल सिचुएशन है, तो आप वहां पे ईओएम दे सकते हैं. So that's a tree which I always tell in my presentation related to going concern, but I cannot spend more time on this because my objective is slightly different. So जो next example उन्होंने दिया है यहाँ पे SA70 में, जहाँ पे applicable financial reporting framework से company has deviated and there is a qualification and that needs to be addressed. Now we have reached to SA 570, which talks about going concern. So going concern, as I mentioned, has changed. Going concern assumption has, the standard on going concern has changed post introduction of the CAM standards. So this was a byproduct of it, and I mentioned why it got changed, because earlier we used to give EOM and material uncertainty on going concern, but क्योंकि CAM introduce हो गया और हमारा जो SA 705 था या SA 706 था change हुआ, so it was inevitable that SA 570 was also required to be changed. So going concern के ऊपर largely now we have to give a separate paragraph. By definition, we will not call it as EOM. Please understand this. EOM on going concern can only be given in one situation, जो अभी हमने एक स्लाइड पहले पढ़ा. अगर वो अनलिस्टेड कंपनी है और क्लोज कॉल सिचुएशन है, तभी हम EOM दे सकते हैं, नहीं तो हमारे पास हमें ऐसे 570 ही यूज करना पड़ेगा. अगेन दिस आर जनरल पर्पस फ्रेमवर्क. अगर मैं इलस्ट्रेशंस की बात करूं तो यहाँ पे दे हैव गिवन एन एग्जांपल ऑफ अनमॉडिफाइड ओपिनियन ऑन मटेरियल अनसर्टेनिटी वेयर डिस्क्लोजर्स आर एडिक्वेट. प्लीज लिसन, आई थिंक यहाँ पे दो एग्जांपल्स दिए हुए. सो अगर आपकी मटेरियल अनसर्टेनिटी है और आपने डिस्क्लोजर्स अप्रोप्रिएट दिए, सो मटेरियल अनसर्टेनिटी पैराग्राफ यू माइट गिव, but disclosure has to be adequate, then an unmodified opinion can be given. That illustration has been given. The second illustration has been given जहाँ पे material uncertainty दी है, मतलब where the material uncertainty is there, but financial statements में inadequate disclosures है, then you have to give qualified opinion. And one more example is there when adverse opinion is presented, जहाँ पे material uncertainty है, लेकिन उन्होंने disclosures ही नहीं दिया. So there is a complete omission of the required disclosures. Then you cannot give true and fair view, and you are saying it does not give true and fair. So see the slight differences. So be picky, be choosy. So जितने भी illustrative formats अगर आप किसी भी standard के पीछे देखेंगे, so there is a brief description of the fact pattern of that matter कि company एक listed company है और इसका going concern में material uncertainty है, company has given adequate disclosures, company has not given adequate disclosures, or company is reluctant giving disclosures, we could not obtain required information, etc., etc. So we have to match those fact patterns with R, and if there is a need be, as I said, we have to mix and match couple of formats together. So I was working on a report, and I think I had used 3 reporting formats in one examples for a particular reporting for a client. So please be open to the fact pattern, what is given and what is required for your client.
So far we have covered SA 700 का series, SA 700, 701, 705, 706. So these are largely the standards which governs the main reporting, चाहे वो आपकी clean reporting है या वो आपकी modified reporting है या आपकी किसी भी तरह की reporting है. Now moving forward, we have done going concern standard. So going concern standard, as I mentioned earlier, we had liberty to give the going concern material uncertainty as modification in terms of giving the emphasis of matter, but post introduction of CAM and related standards, going concern का जो material uncertainty का paragraph है, it has to be given separately. That is not termed as EOM. एक ही सिचुएशन में हम उसे EOM मान सकते हैं अगर वो अनलिस्टेड कंपनी है और क्लोज्ड कॉल है. अगर वो लिस्टेड कंपनी है और क्लोज्ड कॉल है तो आप उसे कैम दे सकते हैं. दे सकते हैं का मतलब there is a choice which rests with the auditor and they do not always give it either as CAM or EOM. Hope I'm clear. So as I said, I cannot spend more time on one standard because the objective is very different. Now moving to another very important standard, which is SA 720. What is SA 720? आप लोगों ने देखा होगा कि ऑडिटर्स रिपोर्ट के साथ आपका मैनेजमेंट के कुछ ऐसे डिस्क्लोजर्स होते हैं जो which is not the auditor's prerogative, जैसे कि director's report or any analytical report what they have attached to their annual report. But since they accompany with the financial statements, those information are part of one terminology which is called as other information. So what is my duty? As an auditor, I am not supposed to audit that other information. I am only supposed to verify certain information which are drawn from the financial statements. अब दो केसेस हो सकते हैं. कई बार तो ऐसा हो सकता है कि when we finalize something, आपने financial statements में आपने grouping regrouping की तो आपका जो total एक particular item का था वो change हो गया, but क्योंकि जो बाकी other information है वो word format में बन रही है तो management missed to update that. अगर Excel होगा तो link sheet से आपका change हो जाएगा, लेकिन अगर वो link sheet नहीं है so जो आपका information आपका Excel में आ रहा है that might got missed to be updated in the other information paragraph. In that scenario, though it's the management responsibility at the first place, but since that information is being part and attached to the financial statements which are audited by us, this is the responsibility of the auditor to the extent that has been drawn from the financial statement. Just to add to that category, जो अब हमारी लिस्टेड क्लाइंट्स के लिए बीआरएस कंपनीज, मैं नहीं बोलूंगी कि क्योंकि एम्प्लॉइज का नंबर डायरेक्टली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नहीं आ रहा है. सपोज रेम्यूनरेशन है किसी का जो मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ड्रॉ हो रहा है. सो इस तरह की कुछ चीजें हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ड्रॉ हो रही है लेकिन वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट के साथ दूसरी रिपोर्ट्स का पार्ट है. Those are other information. So this standard deals with my responsibility as an auditor to verify those information. अब इसमें बहुत सारे सिनेरियोज होते हैं कि बहुत सारी चीजें तो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तक आपकी एनुअल रिपोर्ट भी रेडी है. सो बहुत सारी चीजें आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनने तक रेडी हो जाती है, कुछ पार्शियली आपको वो बोलता है. ये स्टैंडर्ड आपको बोलता है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस सिचुएशन में क्या फॉल करती है. अगर वो इंफॉर्मेशन आपके एनुअल रिपोर्ट आने तक आ गई है तो आप कैसे रिपोर्ट करोगे. कई बार क्या होगा कि आपकी वो इंफॉर्मेशन एनुअल रिपोर्ट आने तक नहीं आई तो आप कैसे रिपोर्ट करोगे. सो वो बहुत सारे इसमें इलस्ट्रेशंस आपको दिए हुए हैं. सो यहाँ पे एक अनमॉडिफाइड रिपोर्ट है जहाँ पे ऑडिटर रिपोर्ट है लेकिन कोई मटीरियल मिस स्टेटमेंट आपको उस अदर इंफॉर्मेशन में नहीं मिला. ये भी हो सकता है कि कुछ जगह पे आपको कोई मटीरियल मिस स्टेटमेंट मिले. अब हियर व्हाट डू यू मीन बाय मटीरियल मिस स्टेटमेंट? दैट मीन्स जो फिगर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आ रही है जो फिगर आपके अदर इंफॉर्मेशन में आ रही है वो मैच नहीं कर रही. सो अगर ऐसा सिनेरियो तो आप कैसे रिपोर्ट करें.
ठीक है, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको पहले मिल गई, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको बाद में मिल रही है, तो आपको कैसे रिपोर्ट करना है, कुछ लिस्टेड क्लाइंट से रिलेटेड है, कुछ अनलिस्टेड क्लाइंट से रिलेटेड है। सो इस तरह के कॉम्बिनेशंस आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, एक ही सिनेरियो में, सो ये ऐसे 720 इट अप्लाइज टू बोथ लिस्टेड एज वेल एज अनलिस्टेड क्लाइंट, लेकिन एक ही सिनेरियो है जहां पे नॉन कॉर्पोरेट असेसीज है, जो आपके जैसे एनजीओज हो गए, जो कंपनी फॉर्मेट में नहीं है, या ट्रस्ट हो गए, उन पे ऐसे 720 अप्लाई नहीं होता। सो एज आई सेड, सबसे पहले आपके लिए सबसे जरूरी है कौन सा स्टैंडर्ड एप्लीकेबल है, और वो है भी कि नहीं। अगर आपने स्टैंडर्ड ये मिस कर दिया कि एप्लीकेबल है या नहीं, और आपने गलत स्टैंडर्ड चूज कर लिया, दोनों ही सिचुएशन में वो आपके लिए इट विल टेक यू टू द रॉन्ग डेस्टिनेशन। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट to choose the right standard. So far, so why I am giving you a brief of standards what we have covered because it will become monotonous अगर हम बार बार रिवाइज नहीं करेंगे। So हमने ऐसे 700 की पूरी सीरीज कवर की, जहाँ पे हमारे मेन स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं हम, ऐसे 700, 705, 706, and then we also understood so 700, 705 and 706 talks about main report, modified report and other information or EUM. वहां पे हमारे सारे illustrative format है, we have to choose the best of the combination. Then we also understood about SS701, which is nothing but CAM. CAM is a different reporting altogether. It's not an adverse opinion. It is only stating the fact कि कहाँ पे एक क्रिटिकल जजमेंट ऑडिटर को अप्लाई करना पड़ा और कैसे उन्होंने रिजॉल्व किया, एंड हाउ द रीच टू द positive conclusion on the auditor's report. We also understood where SA 570, which is going concern standard, which is applicable, क्योंकि going concern के standard को पहले हम EOM का पार्ट मानते थे, जो कि अब EOM नहीं है. There is a separate paragraph which would be there in the beginning of the standard after opinion paragraph. And why after opinion paragraph? Because for any company, going concern viability is such an important aspect which nobody can afford to miss. तो अगर आप going concern के बारे में बाद में देंगे, so एक बहुत important और priority में एक बहुत important information जो पहले आनी चाहिए वो आप मिस कर देंगे. So मैंने आपको बताया था कि ऐसे 700 का पूरा मेरा फॉर्मेट, उसका फ्लो चेंज हो गया है, और क्योंकि ऐसे 700 का चेंज हुआ इसीलिए 705, 701, 706, 570 का भी चेंज हो गया. और उसके साथ एक और स्टैंडर्ड आता है, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, द रिपोर्टिंग टू दोज चार्ज विद गवर्नेंस, क्योंकि कैम की रिपोर्टिंग मेरी दोज चार्ज विद गवर्नेंस को होती है, इसीलिए वो स्टैंडर्ड भी साइमल्टेनियसली चेंज हुआ. So as I said, we are in such a profession that every day we have to see different changes in different regulations or different guidance. So just keep eyes on all those things which are happening and understand those. It's not necessary that those changes or those regulatory changes or other changes would become applicable to you right away, but in case of need we should only be able to recall कि कौन सी चीज कहाँ मिलेगी and how to apply that. If you do that, you win the situation. So there are different standards in SA 720 again. बहुत सारे standards हैं, listed, unlisted, पहले मिल गया, बाद में मिला, पहले मिला, partial मिला, बाद में मिला, और आपको कुछ material misstatement मिला. So all those examples are given here, and you may wish to read this. Now, this series at SA 810 was specifically taken by me some time back, and we understood special consideration when financial statements are prepared in accordance with framework, right? In a specific framework. So this series, so now we are done with series of SA 700, SA 570. Now we are moving to a next series, which is 800. हमने बात की थी जनरल पर्पस फ्रेमवर्क फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क स्टैंडर्ड. लेट्स स्पेंड फ्यू सेकंड्स अगेन. सो जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या जनरल पर्पस फ्रेमवर्क फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर दोज फ्रेमवर्क ड्रिवन फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आप किसी अथॉरिटी को, किसी भी पब्लिक को, जैसे हम बोलते हैं ना, टू whomsoever it may concern, किसी को भी आप सबमिट कर सकते हैं, बिकॉज दीज आर prepared in such a manner that will suit every requirement. But
On the contrary, special purpose framework or special purpose framework reporting or financial statements would mean that वो फ्रेमवर्क कुछ ऐसे मॉडिफाइड है जो एक स्पेशल नीड को केटर करेगा. सो वो फ्रेमवर्क में प्रिपेयर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट मे नॉट बी सुटेबल फॉर एवरी अदर नीड. एंड इफ उस पे ऑडिट हुआ है और एक ऑडिटर ने रिपोर्ट दिया है, सो दैट्स वेरी मच important to be quoted by the auditor कि ये क्योंकि स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है और हमने अकॉर्डिंगली ऑडिट किया है, इट मे नॉट बी सुटेबल फॉर एनी अदर पर्पस. सो वी हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस कि किस फ्रेमवर्क में आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रहे हैं, राइट. सो हमने बात की थी, देखिए दो चीजें, एक तो हो गया कि एक तो प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो गया, एक ऑडिट हो गया. तो प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट मे बी इन द स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क और जनरल पर्पस फ्रेमवर्क, एंड रिपोर्टिंग thereof can be in fair presentation और compliance framework. What do we mean by fair presentation, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, and I will repeat couple of times during the session. Fair presentation is जहाँ पे हम लिखते हैं true and fair view in accordance with this framework, जहाँ पे हमारे पास लिबर्टीज थोड़ी कम होती है कंपनी के पास कि बहुत सारे डिस्क्लोजर्स आप ऐड कर पाओ, लिबर्टीज ज्यादा होती है कि बहुत सारे डिस्क्लोजर्स ऐड कर पाओ. कंप्लायंस फ्रेमवर्क ऑन द कॉन्ट्रेरी इज टू रिपोर्ट whether the company fulfills or complies with certain regulatory requirements or set of regulatory requirements or rule. I hope I'm clear, but if not, please you can send to the organizers in chat or later when we have the question answer discussion, we can again touch base upon this. So अगर आप इसमें देखेंगे तो आपको इसमें फिर से बहुत सारे स्टैंडर्ड्स, बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे. तो सबसे पहले स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क हो क्या सकता है, जैसे आपके कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने हैं ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ क्रेडिटर्स, वेयर जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की अकाउंटिंग है वो आप कैश रिसीट्स और डिस्बर्समेंट के बेसिस पे बना रहे हो. अदरवाइज वी फॉलो द अक्रूवल बेसिस फॉर कंपनीज, राइट. सो ये एक स्पेशल नीड थी क्रेडिटर्स की, आप कैश रिसीट और डिस्बर्समेंट के बेसिस पे कैश फ्लो स्टेटमेंट्स या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाइए, या किसी पर्टिकुलर रेगुलेटर ने आपको कोई रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट दी. फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, दोज आर स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. सिमिलरली financial reporting provisions of a particular contract. For example, the company enters into any bid with a contractor and then they prepare the financial statements as per the terms of those contracts. So कोई लोन कोवेनेंट आपका हो सकता है, या कुछ भी आपका कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, या आपको कोई ग्रांट मिली हो सकती है, उसके अकॉर्डिंग अगर आपने आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए, सो दोज आर स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स or financial statements prepared under special purpose framework. This we had discussed in detail in a very detailed session some time back. So इसमें जो हमारे illustration formats दिए हुए हैं वो दो दिए हुए हैं, एक है compliance framework में और एक है fair presentation framework में, और एक है जहां पे किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए क्योंकि वो भी स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क होगा. दूसरा इलस्ट्रेशन उन्होंने दिया हुआ है जहां पे आपको किसी रेगुलेटर ने बोला है. आप इसका मिक्स एंड मैच कैसे हो सकता है, पहला इलस्ट्रेशन है कॉन्ट्रैक्ट एंड कंप्लायंस फ्रेमवर्क, दूसरा इलस्ट्रेशन है as per regulator requirement and fair presentation. So you might get to reverse it also अगर आपका केस डिफरेंट है. So you have to be very very cautious of the fact कि आपकी सिचुएशन क्या है, आपका फैक्ट पैटर्न क्या है, एंड ये इलस्ट्रेटिव फॉर्मेट्स आपको इंटेलिजेंटली कैसे यूज करने हैं. Next is SA 805. This is not complete set of financial statements, but some specific elements or items of the financial statement. So please be careful. I'm just going back to the slide. This SA 800 is with regards to complete set of financial statements, but this SA 705 regards to specific elements, accounts or items of the financial statement. ठीक है. सो आपका कोई भी एक एलिमेंट हो सकता है, फॉर एग्जांपल कैश फ्लो हो सकता है, या केवल P&L हो सकता है, या केवल बैलेंस शीट हो सकती है, जो एक स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क में बना है. बट वर्ड ऑफ कॉशन, ये आपके कंपोनेंट ऑडिटर की रिपोर्ट पे नहीं लगेगा. आप ये बोलोगे कि ये CFS का एक एलिमेंट है. नो, फॉर दैट देयर इज अ स्पेसिफिक स्टैंडर्ड व्हिच इज SA 600. सो आप SA 600 को इस स्टैंडर्ड से सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते.
अगर मैं फ्रेमवर्क की बात करूं तो जनरली ये जनरल पर्पस फ्रेमवर्क भी हो सकता है, बट स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क भी हो सकता है, सो डिपेंड्स। अगर मैं इसके इलस्ट्रेशंस की बात करूं तो उन्होंने इलस्ट्रेशंस दिया है जहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एक स्पेसिफिक एलिमेंट के ऊपर हम रिपोर्ट कर रहे हैं, या रिपोर्ट ऑन सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ए स्पेसिफिक एलिमेंट विच इज सो यहाँ पे ओपिनियन में हमें क्या लिखना है कि जो आपका कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे अगर आपने ऑडिटर्स रिपोर्ट दिया है और आपने सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ओपिनियन दिया है, सो यू कैन नॉट कंबाइन दोज टू, यू हैव टू मेक इट सेपरेट। सो इलस्ट्रेटिव फॉर्मेट है जनरल पर्पस फ्रेमवर्क और फेयर प्रेजेंटेशन। सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब या तो बैलेंस शीट पे या कैश फ्लो पे या P&L पे। दूसरा है सिंगल financial statements prepared under special purpose framework and fair presentation। अब अगर मैं पहले वाले आइटम की बात करूं कि एक सिंगल आइटम जनरल पर्पस फ्रेमवर्क कैसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है कि आपका जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट है आपने शेड्यूल 3 के फॉर्मेट से उठाया है। सो क्योंकि शेड्यूल 3 का कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जनरल पर्पस होता है जनरली, सो आप अगर आपने सिर्फ बैलेंस शीट या अपने P&L सिर्फ और सिर्फ उठाया है जिसको ऑडिट करना है और वो शेड्यूल 3 के हिसाब से बना है, तो आप उसे बोल सकते हैं सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड अंडर जनरल पर्पस फ्रेमवर्क, राइट। और वो आपका फेयर प्रेजेंटेशन भी हो सकता है और कंप्लायंस फ्रेमवर्क भी हो सकता है। कंप्लायंस फ्रेमवर्क कैसे होगा, आप बोलेंगे कि आपने उसे शेड्यूल 3 के हिसाब से बनाया है और आप उसे ट्रू एंड फेयर व्यू भी बोल सकते हैं। थर्ड एग्जाम्पल है स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क है लेकिन कंप्लायंस फ्रेमवर्क है। बाय नाउ आई एम श्योर यू शुड बी क्लियर व्हाट इज जनरल पर्पस financial statements or what are special purpose financial statements and fair compliance framework and compliance framework. So special purpose framework या special purpose financial statement and general purpose financial statements are the framework जिसमें हम financial statements बना रहे हैं और compliance framework का fair presentation framework are the frameworks जहाँ पे हम उनको audit करके report कर रहे हैं. So one is for the management and one is for the auditors. I'm sure you should be clear. I'm reiterating it क्योंकि जब हम सारी चीजें इकट्ठे पढ़ते हैं तो it is natural to happen that we get confused, and I was confused and I don't feel shy about it because trust me, this session, if I will take another time to my another audience or to my internal teams, and I've taken this session earlier also to my internal assurance staff, I always get to learn new things every time I read the same stuff again and again. I've been giving presentations on Ind AS and IFRS and sustainability, etc., etc. Even if I'm repeating a single presentation for the 11th time, trust me, I will at least get 11 items to learn new. So learning new is not bad, but two things: we have to de-learn or unlearn the wrong things or unupdated things, and we have to keep remembering the things which are always required, right? Debit, credit, we cannot इमेजिन टू चेंज। जो डेबिट है वो डेबिट होना है, वो रहेगा, जो क्रेडिट होना है वो रहेगा, वो कॉन्सेप्ट्स नहीं चेंज होंगे, बट फॉर्मेट्स आपके हैं या फिर रेगुलेशंस है, दोज विल कीप चेंजिंग। सो वी हैव टू कीप मूविंग, अंडरस्टैंडिंग एंड रिमेम्बरिंग दोज थिंग्स जो चेंज नहीं होंगी और जो चीजें चेंज हो गई है। अब मुझे ऐसे 700 का पुराना फॉर्मेट याद रखने की जरूरत ही नहीं है। अगर मैं उसके नोट्स आज बनाती हूँ, पहले ये फॉर्मेट था, आज ये फॉर्मेट है, of no use because SA700 is the my current and future, or maybe SA700 further revise ho jaye, so I have to de-learn the current format. SA800 10 ka applicability, as I said, these are summary financial statements. So what are summary financial statements? I'm sure you would know. So अगर आपने टोटल कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए हैं और आप उनकी कोई समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हो, तो वो स्टैंडर्ड्स पे वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे जो रिपोर्टिंग होगी वो आपकी ऐसे 810 से डील होगी। एंड इसमें जो इलस्ट्रेटिव फॉर्मेट्स हैं वो दो इलस्ट्रेटिव फॉर्मेट है विच आई कैन रिकॉल। वन इज द इलस्ट्रेटिव एस्टैब्लिश्ड क्राइटेरिया जो मैनेजमेंट ने
बनाया है, एंड वन इज द एस्टैब्लिश्ड क्राइटेरिया जो ऑलरेडी अवेलेबल है, लाइक जो हमारी स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस है जिसमें हम समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, एंड वन इज द क्राइटेरिया विच इज बीन डेवलप्ड बाय द मैनेजमेंट की मुझे समरीज फॉर्मेट में चाहिए, एंड दीज आर स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ओनली. बट सिंस दीज आर समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, सो इस पे जो ऑडिट का एंगेजमेंट होगा वो आप ऐसे 810 में आप रिपोर्ट करेंगे, राइट. सो इसमें दो फॉर्मेट्स आपको दिए हैं जो कि क्राइटेरिया, जो मेरा अंडरलाइन प्रिपरेशन क्राइटेरिया वो जो चेंज्ड है, एक है एस्टैब्लिश्ड क्राइटेरिया है, एंड वन इज द क्राइटेरिया विच इज बीन डेवलप्ड बाय द मैनेजमेंट. अब इसमें और जो इलस्ट्रेटिव फॉर्मेट्स हैं वो समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन द क्राइटेरिया डेवलप्ड बाय द मैनेजमेंट, एंड उसमें जो समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो एडिक्वेटली डिस्क्लोज्ड है, एंड क्वालिफाइड ओपिनियन है. सो क्वालिफिकेशन किसी भी वजह से हो सकती है. सो जो दो लार्ज क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया होते हैं वो ये होते हैं कि जो क्वालिफिकेशन आपकी मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कैरी हो रही है वो आपके समरी में भी कैरी होगी. दूसरा मेजर क्राइटेरिया जो क्वालिफाइड ओपिनियन का होता है वो ये कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो ठीक से बने हैं, लेकिन आपने जो समरी ड्रॉ की है उसमें कोई प्रॉब्लम है. मे बी कोई चीज शेड्यूल्ड सिक्योर्ड क्रेडिटर में थी, आपने समरी में अनसिक्योर्ड में डाल दी, या समरी इज नॉट ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ माय ओरिजिनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो आप उसमें भी क्वालिफाइड ओपिनियन दे सकते हैं. इसमें आपकी एडवर्स ओपिनियन का भी स्कोप है, इसमें आपका डिस्क्लेमर का भी स्कोप है. सो कोई भी कॉम्बिनेशन जो आपके नॉर्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऑडिट में बनते हैं वो यहाँ पे भी बन सकते हैं. सो आई वुड रिपीट, हमने यहाँ पे 3 स्टैंडर्ड अभी तक पढ़े ऐसे 800 की सीरीज में, ऐसे 805 and 810. So 800 was on the complete financial statements. ऐसे 805 is on single financial statements or item thereof. And ऐसे 810 is on the report on the summary financial statement. So summary financial statements are the summarized format of the financial statement. So I just repeat from beginning. हमने 700 का सीरीज किया जिसमें हमने 700, 701, 720, 706, 705 ये सब पढ़ा. 700, 705, 706 are reporting standard. 701 was my CAM. 720 was the other meta paragraph, other information जो कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ कंपनी करती है. हमने 570 पढ़ा, और 2400 का सीरीज अभी हम आगे पढ़ेंगे. दोज आर वेरी डिफरेंट. उसके बाद हमने 800 की सीरीज पढ़ी जो कि टॉक्स अबाउट या तो स्पेशल एंगेजमेंट ऑन कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके कुछ आइटम्स पे, या समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, राइट. इसमें आपका हर स्टैंडर्ड में अगर आप पढ़ेंगे तो दो चीजें कॉमन है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने कैसे हैं और ऑडिट कैसे हुए. बने में हमारे पास दो चीजें होगी, या तो आपका स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क होगा या जनरल पर्पस फ्रेमवर्क होगा. जनरल पर्पस फ्रेमवर्क इज विच इज एप्लीकेबल टू ऑल एंड यू कैन प्रोड्यूस इट एज इट इज. स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क इज लिमिटेड टू सर्टेन यूजर्स. आप अनलेस ऑडिटर से परमिशन लेते हैं आप उसको किसी और को सबमिट नहीं कर सकते. अगर मैं रिपोर्टिंग की बात करूं तो दो तरह की रिपोर्टिंग होती है मेरी, फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क और कंप्लायंस फ्रेमवर्क. फेयर प्रेजेंटेशन में जनरली आपको लिखा मिलेगा ऑडिटर की साइड से, इट गिव्स ट्रू एंड फेयर व्यू. कंप्लायंस फ्रेमवर्क में क्योंकि इट हैज टू बी स्ट्रिक्ट कंप्लायंस ऑफ सम फ्रेमवर्क, सो आपको लिखना पड़ेगा कि दिस द ऑडिट का जो कंक्लूजन है आपको लिखना पड़ेगा कि दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट व्हाट एवर द केस में बी इज इन कंप्लायंस विद, वो फ्रेमवर्क का नाम लिखना पड़ेगा. मे बी वो कॉन्ट्रैक्ट से आ रहा है, वो लॉ से आ रहा है, वो किसी भी चीज से आ रहा है, right? So I hope we are clear till now, and I'm trying my level best to summarize certain things in between so that we do not miss or the purpose of today's session is met. क्योंकि बहुत बार क्या होता है, हम बहुत बेसिक स्टैंडर्ड्स पे स्टिक करते हैं. कभी भी कोई रिपोर्ट आती है हम केवल 700 खोलते हैं, कभी भी मॉडिफिकेशन आती है तो हम 705 खोलते हैं. हम ये भूल जाते हैं कि नेचर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है, या वो जनरल पर्पस है या स्पेशल पर्पस है, या सिर्फ वो स्टेटमेंट एक सिंगल आइटम के ऊपर है. तो जब तक मैं स्पेसिफिक स्टैंडर्ड को सही से एनालाइज नहीं करूंगी कि कौन से स्टैंडर्ड में मुझे फॉलो करना है, आई विल ऑलवेज मेक द रॉन्ग डिसीजन.
So बहुत सारे standards, as I said, summary financial statements जहाँ पे qualified opinion भी है, summary financial statement जहाँ पे adverse opinion भी है, ये सब हमने बात की अभी. अब हम आते हैं review of historical financial statements. This is very much known because of very important thing for listed clients, क्योंकि listed unlisted दोनों के लिए applicable है वैसे तो ये, लेकिन 24 एंड 2410 हमेशा पिक्चर में लार्जली तब आता है जब आप क्वार्टरली फाइनेंशियल रिजल्ट्स को रिव्यू करते हैं. सो क्योंकि हमें प्रोसीजर्स 2400 से लगाने होते हैं, लेकिन जो रिव्यू रिपोर्ट का फॉर्मेट है वो हमारा सेबी से आता है, इसलिए हम दोनों को रिपोर्ट करते हैं. सो 2400, इफ यू वांट टू राइट डाउन, इट्स फाइन. एज आई सेड, अगर आप लिखेंगे तो आपको याद रहेगा एंड द कंफ्यूजन विल बी द लीस्ट. एंड आफ्टर द सेशन आपको लगेगा कि कितना सारा पढ़ लिया, लेकिन आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू रिवाइज इट इन बिटवीन. सो 2400 is largely applicable when the review is done by a non-statutory auditor. मतलब statutory auditor कोई और है और जो reviewer है वो कोई और है, तब हम 2400 लगाएंगे. और जब 2410 हम कब लगाएंगे, जब हम ही ऑडिटर है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर है और हम ही उसका रिव्यू कर रहे हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन. क्योंकि अगर आप स्टैट्यूटरी ऑडिटर है और आप रिव्यू कर रहे हैं और आपने अपने रिपोर्टिंग पार्ट में 2400 लिख दिया, our reporting is grossly incorrect and vice versa. If अगर आप ऑडिटर नहीं है और आपने 2410 लिख दिया, आपकी रिपोर्टिंग टेक्निकली is absolutely wrong. Maybe you conducted the audit in the rightest fashion. आपने एनालिटिकल प्रोसीजर्स किए, आपने इंक्वायरी की, आपने असेसमेंट किया, आपने प्रोजेक्शंस देखी, आपने ओवरऑल रिव्यू किया, सब कुछ आपने सिमिलर प्रोसेस किए होंगे. लेकिन व्हेन इट कम्स टू रिपोर्टिंग, ऐसा होगा कि आपने इंग्लिश और हिंदी दोनों के पेपर की तैयारी की, लेकिन इंग्लिश में आप हिंदी लिख के आ गए, राइट? सो दैट विल बी इक्विवेलेंट टू दैट. सो आप बोलेंगे क्या ही फर्क पड़ता है 2400 और 2410, दो बोथ द स्टैंडर्ड्स थ्रोज द सिमिलर रिक्वायरमेंट्स, बट टेक्निकली गलत है, क्योंकि the level of understanding, you being the auditor, would be more than a non-auditor. So इसीलिए दोनों स्टैंडर्ड्स फर्क है. सो अगर आप 2400 यूज कर रहे हैं, मेक श्योर वो 2400 ही यूज होना चाहिए, आप स्टैट्यूटरी ऑडिटर नहीं होंगे. So this standard talks about the limited assurance which we give that the financial statements are free from misstatement. And these cannot be applied. The level of procedures and the types of procedures to change. इस ये जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, ये आप जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी हो सकते हैं और स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी हो सकते हैं. अगर हम इसके रिपोर्टिंग फॉर्मेट्स की बात करें तो आपके पास जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए है जहाँ पे आपकी कॉमन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो है वो मीट हो रही है एज पर कंपनीज एक्ट, या आपका कोई क्वालिफाइड कंक्लूजन है जो कि आपको क्यों दे रहे हैं, क्योंकि मटेरियल मिस स्टेटमेंट है एंड दैट इज अ कंप्लायंस फ्रेमवर्क. दूसरी तरह के और भी आपके पास इसमें फॉर्मेट्स है जहाँ पे क्वालिफाइड ओपिनियन है, जहाँ पे फेयर प्रेजेंटेशन है. एंड अगर आप सेकंड और थर्ड में देखेंगे तो सिर्फ फ्रेमवर्क का फर्क है, रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का फर्क है. आपके पास एडवर्स ओपिनियन कैसे आपको रिपोर्ट करना है वो एग्जाम्पल भी है आपके पास, और डिस्क्लेमर के लिए भी है. सो वाइड रेंज ऑफ एग्जाम्पल्स. अब अगर हम 2400 में रिपोर्ट कर रहे हैं, प्लीज लिसन टू मी केयरफुली. अगर ये एक रिव्यू एंगेजमेंट है, ठीक है, और आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ओपिनियन दे रहे हैं और स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क में आपने रिपोर्ट बनाई है, मतलब सॉरी फाइनेंशियल्स बनाए हैं. सो लिसन टू मी अगेन. इफ यू आर रिव्यूइंग financial statements but these are prepared under special purpose framework, आप 700 वाला रिपोर्ट नहीं लगा सकते, largely because of two reasons. One is 700 is applicable on audit engagement. Secondly, 700 is applicable for general purpose financial statement. So आप अगर ये सोचे कि 700 वाले स्टैंडर्ड के रिपोर्ट को मैं निकाल के उसमें रिव्यू कर दूं और जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जगह पे मैं स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट कर दूं, that is absolutely incorrect. So please use the right guidance, use the right standard, then only
we will be the audit. सब बहुत apply all the skepticism, we document that well, but जहाँ पे आपकी reporting गलत हुई, बाकी सारा काम vanish हो जाएगा. So you cannot use ऐसे 700 का format and make modifications to meet the requirement of your current assignment. You have to choose the right standard. And please don't get bored. I'll keep saying it again and again because that is important. So बहुत सारे और भी formats हैं इसमें. You can see that mix and match है, compliance framework है, financial reporting provision of a contract के pursuant था, cash receipt and disbursement के pursuant है, लेकिन fair presentation है, etc. etc. Getting? So again, अब जब हमें एक view मिल गया कि इसके हमें formats देखने हैं और what is fair presentation, what is compliance framework, what is general purpose financial statement, what is special purpose financial statement, and mix and match of it can happen. आप पहले पूरी लिस्ट देखिए कि उस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड में कौन कौन से इलस्ट्रेशंस आपके मैच कर रहे हैं. हो सकता है आपको एग्जैक्टली सेम इलस्ट्रेशन मिल जाए, मे नॉट बी, नहीं भी मिले, बट मिलता है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप अपना बेस्ट कॉम्बिनेशन यूज कीजिए. As I mentioned, 2400 we will use only when it is given by a non-statutory auditor. Similar standard is there, but it is applicable for those cases when the statutory auditor is giving the review report on the financial information, right? So for this, आपका क्योंकि सेबी की रिक्वायरमेंट में है कि statutory auditor will give your code, आपका applicable होगा, barring a few situations which are very very peculiar. So इसमें भी आपका इसमें applicable financial reporting framework क्यों बोला है? Because of SEBI. आपका मतलब special purpose भी ही होगा largely. इसमें भी illustrative format में आपको उसी पैटर्न पे आपको qualifications, disclaimer or special purpose, fair presentation, compliance framework, all set of illustrations will be available too. So a complete listing of reporting is there, जहाँ पे limitation of scope है, या departure from applicable financial reporting standard है, etc. etc. Now we are done. Initially, when you were there in the initial beginning of the slide, when we had divided our reporting in 4 segments, so we are done with the biggest segment of today's session, which took about more than an hour's time, was part 1. So again, I would reiterate and refresh. We covered 700 ka series, 800 ka series, 2400 ka series, and 570. So 700 ka jo series hai, 700, 705, 706, talks about the basic reporting, modification, EUM, and other matter paragraph. We spoke about 800 का series जो special purpose framework या फिर item या फिर summary financial statements के बारे में बात करता है. ऐसे 570 talks about going concern. Going concern पहले EUM के paragraph में आता था, लेकिन अब क्योंकि उसकी अपनी एक self identity है and there is a lot of interaction between going concern, CAM, other meta paragraph, EUM. So वहां पे सारी सिचुएशंस आपको बताई है कि कहाँ पे आप गोइंग कंसर्न का स्पेसिफिक पैराग्राफ देंगे, कहाँ पे आप कैम दे सकते हैं, कहाँ पे आप ईयूएम दे सकते हैं, which we discussed series of 2400, which is 2400 and 2410. 2400 talks about cases when non-auditor is reviewing, that's a review engagement. Non-auditor is reviewing your financial information or financial statement. 2410 comes into picture when the statutory auditor is reviewing the financial information. Now we are lending to the second part of our session today, which is again, I would not underrate it as compared to part 1, because you need not to report only under 700 or 800 or 2400 or ऐसे 570. अगर आपकी requirement बिल्कुल different है, as I said, I was looking at one publicly available information that was not a listed company but a public company, though that information should not be there on the internet, but now everything else, every other thing is available. So there was a specific kind of an engagement
बट व्हाट दे डिड, जो मैंने अभी एग्जांपल दिया था, उन्होंने ऐसे 700 की रिपोर्ट को यूज किया और जो इंगेजमेंट था वो इंगेजमेंट्स के नाम और उसका जो कंक्लूजन था उस पैटर्न पे चेंज कर दिया. I felt very bad about it because while a specific standard or a guidance is available to review that report or give review report on that prospective financial information, right? So it may be a complete or a condensed set of financial statements, right? So what is prospective financial statement? Had we were face to face, I would have definitely asked. So prospective financial statements are those financial information which do not belong or pertain to my historical financial statement. That means it relates to future. And if you read on the very screen, it says दो तरह की रिपोर्ट का इन्होंने यहाँ पे फॉर्मेट दिया. वन इज प्रोजेक्शन एंड वन इज फोरकास्ट, राइट? There is a slight difference between two, right? So सबसे पहले हमें ये जानने की जरूरत है कि ऐसे 700 या 2400 या 800 आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज जो भी हमने पीछे पढ़ा दैट रिलेट्स टू द हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट. दिस इज फॉरवर्ड लुकिंग. आपने देखा होगा कि बैंक्स को हमें प्रोजेक्शन भेजने होते हैं या प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट्स देने होते हैं, या आपको इंटरनल पर्पसेस के लिए, मैनेजमेंट के लिए प्रोजेक्शंस और फोरकास्ट बनाने होते हैं. सो जो आपका फोरकास्ट है दैट इज समथिंग बेस्ड ऑन पास्ट पैटर्न, राइट? कि आपने पास्ट पैटर्न यूज किया और आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो आपका फोरकास्ट है. प्रोजेक्शन इज नॉट बेस्ड ऑन दैट रियलिस्टिक पैटर्न विच इज यूज्ड इन द फोरकास्ट. सो दोनों में स्लाइट डिफरेंस है, दोनों के जो रिपोर्ट्स हैं. अब it is very very difficult to report on something which which hasn't happened, right? But there is a possibility that we examine and we report in a limited sense though, but we do. So कई बार banks केवल आपकी projected balance sheet या forecasted balance sheet पे rely कर देते हैं, but at times they say कुछ तो comfort लेके आओ auditor से या non auditor से. So उन सबको आपको कैसे examine करना है, because आप अपना पास्ट ट्रेंड देख रहे हो कि आपका जो कंपनी का ग्रोथ रेट है वो 20% है पिछले 5 सालों से, और आपने जो प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट बनाई उसमें आपने 30% या 35% डाल दिया. इट माइट हैपन बिकॉज यू माइट हैव अ फ्यूचर लॉग बुक or a future records, sorry, future orders in hand, and which might give you 35%, but that needs some verification. So jab bhi aap so it's easy to audit or review the past historical data, but it's slight difficult to verify and examine the future data. So आपको क्या procedures लगाने हैं और क्या confirmations लेने हैं या किस basis पे आप वो उसको जो भी वेरीफाई कर रहे हो, जिस भी लिमिटेड वे में आप डाइल्यूटेड वे में वेरीफाई कर रहे हो, वो सारे प्रोसीजर्स इस स्टैंडर्ड में दिए हैं. दिस इज वेरी डिफरेंट अगेन. अब आप ये बोले कि परफॉर्मा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगेन माइट बी related to the past financial statements. I'm sure you know what is pro forma financial statement. आप पिछले 5 सालों के financial statements को आपको revisit करना होता है या redo करना होता है based on the qualifications or other remarks which are being made. So these are related to historical financial statement. और आप historical financial statements वाले आप कुछ भी आप reporting format use कर सकते हो, which is absolutely incorrect. सो क्योंकि ये लॉ से डराइव होता है, तो जो आपको प्रोस्पेक्टस में परफॉर्मा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंफॉर्मेशन कंपाइलेशन देना है, दैट नीड्स टू बी ड्रिवन थ्रू दिस वेरी स्टैंडर्ड व्हिच कम्स अंडर 3420, which is assurance engagement to report on the compilation of pro forma financial information included in a prospect. अब anyone out of you might say कि ये तो मेरे काम का ही नहीं है और I have not ever done it. But if you have not done it, you might do it. But at least if you have read through it once and you understood it once that there is a specific standard which deals with this particular thing, why to modify other standards in the first place only?
So इसमें जो illustrative format है वो एक ही है, unmodified opinion, and that is about 3420. So we are done with second aspect, which talks about either. So the both of these are not exactly related to the past information. So the earlier section we read was on the prospective financial information, which relates to the future or forecast, etc. 3420 is very much driven from regulation and a very specific purpose to be included in the prospectus of the company. So this is called pro forma financial statements, and there's a specific format, we have to use that. So we are done with two sections, and I'm sure by now you would have understood the importance of today's session, that why we are doing it and why we are summarizing it, so that we land in the right direction and we use the right standard. Now, the third section which I'm going to talk about is related services. So what are related services? Related services may not exactly fall within the definition of audit or review. So अभी तक हमने जितना पढ़ा वो audit and review पढ़ा. It is slightly different form of reporting. At times it is difficult to perform either the audit or the review of the items which the company wants us to do. So what to do? So that's an alternative kind of a reporting that is called as AUP reporting, agreed upon procedure reporting, of the financial statement, of the financial information. आप इसमें बहुत सारी चीजें embed कर सकते हैं. So special purpose framework भी हो सकता है, आपका जनरल पर्पस फ्रेमवर्क भी हो सकता है, आपका कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी हो सकता है, आपका कंपोनेंट भी हो सकता है. तो ऐसा नहीं है कंपोनेंट और सिंगल सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखते ही आप 800 की सीरीज पे जंप कर जाए. आपको पूरा समझना है कि एंगेजमेंट क्या है. एंगेजमेंट इज performing certain set steps to that particular information or set of information. So here that professional judgment applies. So as I said, do not jump to 800 ka series when you see that it is applied on single set of financial statement or single or item of that financial statement. See the nature of the procedure we have to apply. We have to apply agreed upon procedure. So हम agree करते हैं, हम आपसे लिस्ट लेंगे, आपका फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे फिक्स एसेट का, उसका जो हम रिपोर्ट है वो देंगे, वो रिपोर्ट लिमिटेड होगा, हो सकता है हम डीड्स वगैरह चेक करके आपको बता दें, हो सकता है हम फिजिकल वेरिफिकेशन करें. सो जो आप बोलोगे वो हम करेंगे और उसके बेसिस पे लिमिटेड रिपोर्टिंग होगी. सो द एक्सटेंट ऑफ द इंफॉर्मेशन, द एक्सटेंट ऑफ द प्रोसीजर विल डिपेंड अपॉन द अग्रीमेंट बिटवीन द इंगेजमेंट पार्टी. सो जो आपको मैनेजमेंट बोलेगा वो राइटिंग में आप रिपोर्ट का पार्ट भी करेंगे, ABCD, एंड ABCD का आप A का कंक्लूजन ये, B का कंक्लूजन ये, C का कंक्लूजन ये, D का कंक्लूजन ये, and we categorically write in this AUP report that this is not equivalent to review or audit. अगर हमने review और audit किया होता तो शायद हमारी फाइंडिंग कुछ और हो सकती थी, क्योंकि हमने सिर्फ लिमिटेड प्रोसीजर्स अप्लाई किए, राइट. सो इसमें भी मैंने जैसे आपको बोला कि जनरल पर्पस रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क भी हो सकता है, स्पेशल पर्पस भी हो सकता है. सो इस रिपोर्ट का नाम हम देते हैं रिपोर्ट ऑन फैक्चुअल फाइंडिंग्स इन कनेक्शन विद अकाउंट, इन कनेक्शन विद व्हाटएवर द केस मे बी. सो द इलस्ट्रेशन व्हाट दे हैव गिवन हियर इज related to accounts receivable. Okay, so moving ahead, we have covered SA 4400, that was related to agreed upon procedure. So these are the third segment. This is the third segment we are in. The fourth one is compilation engagement. अब ये बहुत ही different से standard है. Now confusion arise होना बहुत जरूरी है, because I also got confused when I had prepared the presentation at the first time. So what do we mean by compilation engagement? So compilation engagement is to compile something, but on behalf of the engagement. So here, reporting part may not be there, right? So we are putting our feet into management shoes. हम management के लिए कोई चीज combine कर रहे हैं और compile कर रहे हैं rather. It may be a financial information also or a non-financial information. Let's take some example. Last year,
कंपनी सेक्ट में जो CSR का रिपोर्टिंग अब आपको कंपलसरी हो गया है, आपको ऑनगोइंग नॉन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स के लिए रिपोर्टिंग करनी है, या आपको इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी से रिव्यू कराना है, नहीं कराना है, आपको बोर्ड रिपोर्ट में काफी कॉम्प्रिहेंसिव डिस्क्लोजर्स देने हैं, फाइनेंशियल में डिस्क्लोजर देने हैं. कंपनीज माइट से we are not equipped with all these technical abilities. Please put together our CSR reporting, right? मैनेजमेंट के लिए भी और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो हम देंगे उसके लिए भी, और इट में सो हैपन जो आपकी BRSR रिपोर्टिंग, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग आई है अभी, उसके लिए भी. That is a compilation engagement. Similarly, जो environmental reporting या statistical returns की बात कर रहे हैं, ये ग्रीन हाउस स्टेटमेंट अब हमें यहाँ से निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए एक स्पेसिफिक गाइडेंस और स्टैंडर्ड अब आ गया है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड बहुत पहले आया था, इसलिए अभी दिस नीड्स टू बी अपडेटेड टू टेक आउट दिस ग्रीन गैस स्टेटमेंट, क्योंकि इसके लिए स्पेसिफिक स्टैंडर्ड है. हो सकता है कि कंपनी आपको बोले कि आप मेरे डेटर्स की इंफॉर्मेशन को कंबाइन कर दीजिए, कंपाइल कर दीजिए, या फिर उनको हम कॉन्फर्मेशन भेजते हैं, उनका रिजल्ट्स आप बना दीजिए. एनी काइंड ऑफ कंपाइलेशन व्हाट यू आर डूइंग ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी इज अ कंपाइलेशन एंगेजमेंट. इट मे और मे नॉट कैरी अ रिपोर्ट. सो आपको बोल सकते सिर्फ कंबाइन कर दीजिए, कंपाइल कर दीजिए, या आप वो भी बोल सकते कि बट अगर आप कंपाइल करोगे तो खुद से कंपाइल करके आप रिपोर्ट नहीं दे पाओगे, मतलब ये तो सेल्फ रिव्यू थ्रेट होगा. तो आपको देखना पड़ेगा कि एंगेजमेंट एग्जैक्टली है क्या. अकॉर्डिंगली वी माइट हैव टू स्विच टू अनदर स्टैंड, राइट. अब अगर हम कंपाइलेशन स्टेटमेंट एंगेजमेंट्स की बात करें, जो इलस्ट्रेटिव फॉर्मेट्स है, तो जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए उन्होंने बोला कि आप हमारा जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना दीजिए, या आप हमारे स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना दीजिए, या मॉडिफाइड फॉर्म में बना दीजिए, या आपको बोला कि इंटेंडेड यूजर के लिए मुझे स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क बनाने हैं, मेरे पास टीम नहीं है या टीम इक्विप्ड नहीं है, जहां पे उन्होंने बेसिस ऑफ अकाउंटिंग या तो मैनेजमेंट ने बताई है या किसी कॉन्ट्रैक्ट में आ रही है, वो आप यूज करेंगे. या हो सकता है कि किसी स्पेसिफिक एलिमेंट या अकाउंट को कंबाइन करने के लिए, जैसे मैंने आपको डेटर के लिए बोला, या किसी रेगुलेटरी कंप्लायंस के लिए आप यूज करें. So please, I would again reiterate the fact this is not exactly the audit and review assignment. This is a compilation assignment. जो हम बात कर रहे थे कि किसी एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे आपको रिव्यू रिपोर्ट देनी है या ऑडिट रिपोर्ट देनी है, वो 800 की सीरीज में जाएगा. दिस इज द डिफरेंस. सो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि सिंगल सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या आइटम के लिए तो हमने अभी पीछे 800 की सीरीज पढ़ी थी, 4410 में हम क्यों पढ़ रहे हैं. सो बी वेरी वेरी क्लियर, बी वेरी वेरी प्रिसाइज what is intended. Now we are done with 3 segments. One was related to basic reporting standard. The other one was the special related series. Third one was the related services like prospective financial statements या आपका ये जो अभी हमने बात की. अब last, which is very very important segment, so which we are going to cover. बहुत सारी जगह पे हमारे स्टैंडर्ड्स नहीं है, तो गाइडेंस नोट्स या इम्प्लीमेंटेशन गाइड्स इंस्टीट्यूट ने इशू किया है ऑन ऑडिटिंग एस्पेक्ट, अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स पे भी आते हैं. एंड आई वुड लाइक टू गिव कुडोज टू ICAI, द वे दे हैव स्ट्रक्चर्ड द material and the guidance for members in the institute, the kind of resources they have provided or made us available, and that too free of cost, is really really commendable. Institute is doing a tremendously good job for our purposes. So please do make use of the valuable inputs from ICAI. Please do not do Google and to see international guidance for those things which are available nationally, well drafted by ICAI and the committees and their study groups. Please use those. So at so many places when the particular reporting has not been reported or guided by a specific standard or guidance note, through implementation guides issued by ICAI, they have given beautifully drafted guidance or even the language for a particular case. Please make use of it. That is least challengeable by any regulatory body because that is being drafted and guided to us by our own accounting regulator ICAI. So, जो guidance note है उसमें the first in the row comes is guidance note on combined and carve out financial statement. So what are combined financial statements or carve out financial statement? The definition is given, and as I said, because of the limitation in scope,
because of the limitation in scope, we would not be able to define what are combined and carve out financial statements. What are the indicative situations when these are required to be prepared, and what are the procedures on preparation for the same, and what are the disclosures which are required to be given. Again, क्योंकि हमें बहुत specific purpose के लिए बना रहे हैं, ठीक है, तो these are called as special purpose framework statements. The next, we have the guidance on not consolidated financial statements. So this talks about the procedures to be applied in the audit of these consolidated financial statements. This gives us illustrative formats also, how to disclaim a situation when some of the components are audited by others. So this has to be read together with SS 600, which talks about audit of the component auditors, etc., and the responsibility of the principal auditors with respect to the component auditors, right? So अगर हम illustrative format की बात करें तो they have spoken about independent auditors report containing modified and unmodified opinion based on the assumption that the group has certain components which are material to the group financial statements, and इसमें कोई भी situation हो सकती है कि हो सकता है component auditors ने कोई मैटर, ये जो रेगुलेटरी रिपोर्टिंग की बात कर रहे हैं उसमें दिया है, और ये भी हो सकता है कि मॉडिफाइड ओपिनियन भी हो. So as I said, multiple combinations they have given where components are being audited by others and may not be audited by others, and वो मटेरियल भी हो सकते हैं, नॉन मटेरियल भी हो सकते हैं. So while I'm working as a principal auditor and I am combining the report of my main company and the specific components, I have to pay attention that the components which are included in my parent company's financial statements are material or non-material. अगर material ही नहीं है, so what we will do or achieve out of it. एंड अगर वो मटेरियल है और हम मिस कर देते हैं उसको रिपोर्ट करना, देन अगेन माय रिपोर्टिंग इज नॉट करेक्ट. सो कंसिडर अ कंपनी एंड इट्स ब्रांचेस. सो अगर कोई ब्रांच मटेरियल है और उस कंपनी के लिए मैं उस मटेरियल ब्रांच की रिपोर्टिंग को एडिक्वेटली रिपोर्ट नहीं कर रही हूँ कंबाइंड फॉर्म में, सो मेरा जो कंबाइंड रिपोर्टिंग है दैट इज इनकरेक्ट. सिमिलरली ग्रुप लेवल पे बीइंग अ प्रिंसिपल ऑडिटर, इफ आई एम नॉट considering the material aspect of the group entities consolidated in that, if that is incorrect, everything else is incorrect. This was very important, guys, and is still implementable and important, but in limited sense, how I just did. So this implementation guide came the time when the Ind AS came into picture way back in 2015. And when the Ind AS preparation, Ind AS financial statements were prepared for the very first time, when the companies got into that implementation strategy, or it got prepared under SEBI requirement because listing was done by the company for the first time, because listed company पे applicable है. या जब हम पहली बार Ind AS financial statements बनाते हैं तो उसके जो corresponding हमें audit करना होता है, उस केस में जो हमारे रिपोर्टिंग हमें करनी कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर्स पे, बिकॉज वो कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर एंड वी हैव टू मेक इट पार्ट ऑफ द फर्स्ट इंड एस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बिकॉज मुझे ओपनिंग बैलेंस शीट भी देनी होती है. उन तीनों सिचुएशंस में ये गाइडेंस वाज यूज्ड टू मच. आई वुड नॉट से दैट इट हैज बिकम रिडंडेंट, बिकॉज any company may be listed now, maybe it was unlisted. In that case, the company would fall within that requirement. The company becomes the subsidiary of a listed company right now. The company covers that threshold or meets that threshold now, or company voluntarily chooses to prepare Ind AS. In either of the situation, the company might want to prepare or has to prepare. So might want when it is voluntary, and has to prepare means when it becomes compulsory. In either of the situation which I just spoke about, in either of those situations, the companies has to prepare the Ind AS, its first Ind AS balance sheet for the first time.
In that case, how to audit those financial statements which are prepared by the company for the first time under Ind AS, how to audit that. That guides an auditor to audit, and which is a very important guide. So once I was speaking to somebody and he said, "ये guidance note तो implementation guide तो delete हो जानी चाहिए." I said, "Why it should be deleted?" They said, "अब तो कोई implementation होता ही नहीं." I said, "Why it doesn't happen?" I said, "These are the different cases." Okay, yeah, I did not even think about it. So please understand, as I said, you might not even use it in next 5-6 months to come, but when you get to use it, you should know that this exists and this is still alive, and this throws the guidance as well as the format. That is the importance of understanding everything together today. So ये जो illustrative format है, if you look at, वही सारे situation में है. And if you see the last point, it also talks about the limited review also. So the company may want you to not to report, but to limitedly review that. In that case, you can use this. Auditors report on quarterly financial results. Other than banks and insurance companies, you can use it. Unmodified हो सकता है. क्या company ने कोई special purpose financial statements बनाए solely for the purpose कि आप उसमें comparative information आप उसे disclose कर पाओ, जो आप opening balance sheet बनाते हो, वो आपको यहाँ पे इलस्ट्रेशन दिया हुआ है. और कोई भी आपका जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो सकता है जिसमें आपको कंप्लीट ट्रू एंड फेयर व्यू, मतलब फेयर कंप्लायंस में आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देने हो सकते हैं. नाउ टॉकिंग अबाउट गाइडेंस नोट ऑन सर्टिफिकेशन ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस. सो जो आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस हम ऑडिट करते हैं उसपे जो हम सर्टिफिकेशन देते हैं which is published as a part of the annual report, this guidance note talks about that. Pura guidance note, verification procedure, because this is all law driven, so you should be equipped with the relevant underlying updated guidance as well that talks about that. So हो सकता है सारी चीजें ठीक हो तो आपका क्लीन सर्टिफिकेट होगा, हो सकता है आपकी कुछ चीजें मिसस्टेटेड हो बट नॉट मटीरियली मिसस्टेटेड, तो आपका ही गाइडेंस नोट हो सकता यूज हो सकता है कुछ चीजें आपकी मटीरियली मिसस्टेटेड हो, या आप कुछ आपको उन्होंने काफी सारी चीजें वेरीफाई करने के लिए नहीं दी, या आपको कुछ चीजें डिस्क्लेमर आपको डालना पड़े क्योंकि आपको पूरा वेरिफिकेशन के लिए नहीं मिला, या ये भी हो सकता है कि जो चीजें आपको सर्टिफिकेट में रिपोर्ट करनी है those are not in compliance with SEBI LODR requirements. In that case, you are not stopped from giving an adverse opinion. So किस सिचुएशन में इस तरह के सर्टिफिकेट्स में आपको क्वालिफिकेशन देना है, क्लीन रिपोर्ट देना है, या फिर डिस्क्लेमर देना है, या उनको कैसे वर्ड करना है, दैट ऑल गाइडेंस इज हियर. डू नॉट यूज ऐसे 706 or 705 for this purpose. Please use this because that is a very specific requirement which is SEBI LODR driven. So the wordings of it, the procedures of it would be very much different from your regular audit. And since it's a certification, if you see guidance note on certification of corporate governance, so the gravity of certification for any kind of certification is always more than an audit or a review. So अगर मैं हायरार्की में देखूं तो सबसे नीचे AUP, फिर आपका review, then audit, and then certification. So certification has the highest gravity of the verification because we cannot write true and fair, we cannot write complies, we have to write true and correct. Now the next guidance note which we talk about, which is important from the audit aspect, is IFC. That was revised a couple of times pursuant to the requirements which kept changing as per the Companies Act. And it is a very thorough guidance note which talks about all the requirements, all the possibilities of IFC over financial reporting. So I'm not talking about the only IFC which relates to company side, जो कि बहुत बड़ा ambit है. हमारा जो ambit है, that is IFC on financial reporting and related to financial reporting. So initially, if any one of you could recall, कंपनीज एक्ट में जब रिक्वायरमेंट आई थी तो ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वाज एडेड मच लेटर एंड एवरीबडी वाज वरीड इंक्लूडिंग ऑडिटर्स की हाउ कैन वी टेक रिस्पांसिबिलिटी ऑन एंटायर एफसी व्हाइल वी आर कंसर्न्ड विद द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. सो दिस अमेंडमेंट हैपेंड लेटर and this guidance note also got revised. So this guidance note talks about specifically for the auditors that ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आपका जो IFC अप्लाई होता है उसको कैसे वेरीफाई करना है, क्या टेस्ट एंड बैलेंसेस है,
किस सिचुएशन में आप कैसे रिपोर्ट करेंगे एंड स्टफ लाइक दैट। तो अगर आप इलस्ट्रेटिव फॉर्मेट देखते हैं तो देयर इज अ सेपरेट मॉडिफाइड ओपिनियन ऑन ऑडिट ऑफ आइकोफर, जो हम बोलते हैं ऑन स्टैंडअलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मॉडिफाइड ओपिनियन का फॉर्मेट है जहां पे आपको क्वालिफाइड और एडवर्स ओपिनियन का फॉर्मेट मिलता है एंड इट इज नॉट इम्पैक्टिंग। सो अगर आपका आईएफसी इम्पैक्ट हो रहा है, आपने कोई भी रिपोर्टिंग की आईएफसी के ऊपर, देर इज अ ग्रेव चांसेस कि आपकी जो मेन रिपोर्ट है वो भी इम्पैक्ट। सो दैट असेसमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आई एम डैम श्योर अगर आपने ये एस्पेक्ट पहले नहीं पढ़ा या आपने नहीं सोचा, यू कांट इवन थिंक ऑफ एंड रिलेट कि आईएफसी मैंने क्वालिफाई किया है तो मेरी मेन रिपोर्ट भी क्वालिफाई हो सकती है। आपने अब ये पढ़ा है, सुना है और पहले भी पढ़ा है आई एम श्योर, तभी आप वो इवैल्यूएशन कर सकते हैं। अगर कोई चीज मैंने नहीं पढ़ी तो वो एकदम से मेरे माइंड में नहीं आएगी, बट नाउ इफ आई एम लुकिंग इट एज अ गाइडेंस एंड आई एम जस्ट हियरिंग इट आउट वंस, सो आई विल ऑलवेज drive my mind that if my IFC even EOM भी मैं अगर IFC में दे रही हूँ, will it impact my main report, will it warrant an EOM in my main report as well. So अगर आपका कोई क्वालिफिकेशन है आईको फर्म में, आपको रिलेट करना है, इवेल्युएट करना है कि आपकी मेन रिपोर्ट में तो क्वालिफिकेशन नहीं है। सिमिलरली डिस्क्लेमर का फॉर्मेट with and without impacting my main report, modified adverse opinion जो कि मेरी causing a modified, अगर मेरा आइकोफर ही adverse है या disclaimed है, so there are least chances कि मेरी main report qualify ना हो। separate report in case of CFS, so again जो हमने पहले भी पढ़ा था, ये तो हमने स्टैंडअलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में 4 सिचुएशन देखी जो इलस्ट्रेटिव फॉर्मेट है। मेरे पास एक इलस्ट्रेटिव फॉर्मेट है इन केस जहाँ पे मेरा CFS है और वहां पे हमने assumptions फॉर्म की है कि ऑडिटर्स जो कंपोनेंट ऑडिटर से रिपोर्ट आई है वो मटेरियल है, नॉन मटेरियल है, ऑडिटेड है, अनऑडिटेड है, उनकी रिपोर्ट्स में क्या लिखा है, इज इट क्लीन, एडवर्स, डिस्क्लेम, अकॉर्डिंगली मेरी मेन रिपोर्ट पे क्या इम्पैक्ट आएगा, वो सारे एस्पेक्ट दे हैव गिवन। सो माय humble submission again is that whenever you are conducting any kind of a specific engagement, please read through what kind of illustrations can be and can be used for your specific engagement. आपको एक फ्लेवर मिलेगा, आपको एक आइडिया मिलेगा कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन को हम कैसे रिपोर्ट कर सकते हैं और कैसे वर्ड कर सकते हैं। सो हमने बहुत अच्छा ऑडिट किया, हमने बहुत सारी फाइंडिंग्स निकाली, दोज वर वैलिड ऑल्सो, दोज कॉस्ट एडवर्स ओपिनियन ऑल्सो, दोज कॉस्ट qualified opinions also, but wording that qualification or adverse opinion or modification thereof, any kind of modification, requires a thoughtful decision how to word it. So these formats give us very authentic and set language which you can without any tension, without any doubt, you can use if it matches to your case. So yes, so initially जब ये पुराना वाला गाइडेंस नोट आया था आईएफसी का, so this is very very elaborative. So some of the practitioners were reluctant or some of the companies were also reluctant to apply those many checks and balances for a very small sized company. So एक और implementation guide आई. So as I said, जब तक आपको पता ही नहीं है कि गाइडेंस है तो आप क्या करेंगे, वो मेन गाइडेंस को देखते रहेंगे। अब आपको पता है या आपको पता होगा आई एम श्योर कि एक और इम्प्लीमेंटेशन गाइड है विच इज एप्लीकेबल फॉर अ स्मॉलर साइज्ड कंपनी। इन दैट केस आप उसे यूज कर सकते हैं उस साइज की कंपनीज के लिए, राइट। सो अगेन कौन सी कंपनीज छोटी मानी जाएंगी, लीस्ट कॉम्प्लेक्स मानी जाएंगी, वो आपको गाइडेंस दिया है, उसके कुछ FAQs दिए हुए हैं एंड देन कुछ इलस्ट्रेटिव फॉर्मेट दिए हुए हैं जो कि SFS पे अनमॉडिफाइड फेयर कंप्लायंस फ्रेमवर्क में दिया हुआ है और आपकी अनमॉडिफाइड ओपिनियन और भी सिमिलर केसेस में और क्वालिफाइड ओपिनियन भी आपका दिया हुआ है, सो यू कैन यूज दैट। This I think was a recent session by ICAI. I would not elaborate that much, but a few points to understand together with everything what we understood. So at times we have to issue reports or certificates on special for a special purpose. So वो आपके कोई bid हो सकते हैं, contracts हो सकते हैं या फिर
कोई लॉ की रिक्वायरमेंट हो सकती है या गवर्नमेंट का कोई स्कीम हो सकता है, उस केस में डिफरेंट तरह के रिपोर्ट्स एंड सर्टिफिकेट्स मैनेजमेंट को इशू करके मैनेजमेंट को देने होते हैं या अपने पर्पस के लिए यूज करने होते हैं उस केस में। यहाँ पे बस एक इंपॉर्टेंट चीज है विच आई वुड लाइक टू हाईलाइट, विच आई एम श्योर द प्रीवियस प्रेजेंटर मस्ट हैव डन। एट टाइम्स गवर्नमेंट रेगुलेटर्स के बहुत डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं, तो उन्होंने आपको एक पेज का सर्टिफिकेट दे दिया कि इसमें ये फिगर्स भरो और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का स्टैम्प एंड सील चाहिए आफ्टर देयर वेरिफिकेशन, एंड वी नीड दिस फॉर्मेट। बट if you look at this guidance note, there is a specific requirement and the coverage, कौन से special purpose certificates आपके cover होंगे। उस केस में अगर ये इस guidance note में cover हो रहा है तो आप वो गवर्नमेंट वाले फॉर्मेट में सर्टिफिकेट नहीं इशू कर सकते, तो क्या करें? देयर विल बी अ डेडलॉक, बट द गाइडेंस इज गिवन इन द गाइडेंस नोट इटसेल्फ। इट सेज आप अपना प्रोसेस फॉलो कीजिए, आप इस गाइडेंस नोट के हिसाब से जो भी बेस्ट सुटेबल फॉर्मेट है वो आप क्लाइंट को इशू कीजिए, लेट देम रिजेक्ट इट ओवर द ईमेल और थ्रू acceptable format that this is not acceptable by the regulatory body, let it come to you, then you issue the certificate in the format which is given by the government or the statutory authority, stating that कि हमने इशू किया था इस गाइडेंस नोट में which is rejected, and with that note only you can issue that certificate, which some of the practitioners don't know that is the process. So I'm sure the previous presenter must have highlighted that fact to you, but some of you might not have got the opportunity to hear them or may have missed. So if that is the case, please understand this very crucial aspect. आपको जो भी फॉर्मेट स्पेशल पर्पस के लिए किसी भी गवर्नमेंट अथॉरिटी से मिलता है, आप एज इट इज इशू नहीं कर सकते। आप इस फॉर्मेट से इशू करेंगे, लेट देम रिजेक्ट इट, then you issue in their format with a remark that we had issued it and this is not acceptable. That is the formal process which has been laid down by this guidance. So इसमें बहुत सारे आपके फॉर्मेट्स दिए हुए हैं हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए या फिर preparation of text. So this talks about applicability, which I just spoke about. And these are the formats. So पहला format अगर हम पढ़ते हैं, so let's spend few seconds here, which is very important. So practitioners report on turnover, net worth, net profit, working capital and similar engagement pursuant to a tender requirement, वो एक format है. Annual activity certificate for Indian branch of office or license office of a foreign company. Third is एक देखिए आप इसमें देखेंगे तो report भी है और certificate भी है. So you have to see which kind of engagement you have signed with the company. So auditor report है manner of utilization of funds as required by SEBI, and the last one on the screen is statement. आपको एक report issue करनी है, statement of fixed asset for last 2 years in respect of one of the projects of the entity. So ये एक ऐसा guidance note है which is very wide, can cover anything and everything. So you have to be very cautious. आपको क्या करना है, क्या procedure करने हैं, और जो मैंने अभी आपको एक प्रोसेस बताया जब आपको फॉर्मेट मिलता है, दैट नीड्स टू बी कैरीड आउट एंड रिपोर्टेड अपॉन. So that's it from my side. I think I'm a little early and we have the opportunity to ask questions. Anilji, if you have any questions, I'm happy to address. And just a caveat, I have covered a wide spectrum of reporting standards today. So it has almost everything in terms of reporting conclusions and reporting, including guidance note. Based on my experience or practice, whatever I know to the best of my ability, I would like to address. If something is there which is not very much in the correct light, if it is gray, I would take the facts and I would get back to Anilji or to that person directly after my due research. So I would not like to comment upon anything which I am not very sure, because as I say, nobody in the world can be perfect, and I would not comment upon anything which is not sure by me, and this subject itself is very subjective, right? So please feel free to ask or raise your questions. I would be happy to address if I know. If not, I commit, I will do my proper research and get back to you by tomorrow. Anilji, you have something? Thank you so much, ma'am. Thank you so much for
tackling this very important aspect, as well as all the standards which are applicable and which are very important for audit reporting. So I have received certain queries, and Yes, sir. still I am feeling some technical glitches there, and still I'm receiving some queries. So, ma'am, first query is one member is asking, can statutory auditor do the compilation engagement? Sir, a statutory auditor largely cannot do compilation engagement for a very simple reason, because that might give a self-review thread problem to them. But that compilation, if it relates to non-financial information, for example, green gas house emission or anything which is not giving a rise to a self-review thread, that can be evaluated. But that will have to be seen. So we have to apply the general fundamental. अगर कोई भी चीज सेल्फ रिव्यू थ्रेड के एम्बिट में आएगी, इंडिपेंडेंस के थ्रेड में आएगी, तो हम नहीं कर सकते. Yes, yes. And in case assurance engagement for financial statement of an AOP, which reporting framework will be used? Whether companion engagement will correct? So if I understood you correctly, for an AUP engagement of financial statements, complete set of financial statements you're talking about. Yes. For financial statement of an AOP. So जितना मुझे समझ आया, आप ये पूछ रहे हैं कि अगर किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे AUP अप्लाई करना है मुझे, तो कौन सा रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क यूज करना है, या कौन सा फ्रेमवर्क फॉर प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूज करना है? कौन सा फ्रेमवर्क यूज करना है प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए? सर, वो डिपेंड करता है मैनेजमेंट की, क्योंकि ये एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स है, राइट? सो ये AUP रिपोर्ट आपको सबको तो सबमिट करनी नहीं है. So that is for the very specific use by the management. So that will solely depend the purpose for which those that AUP is being conducted. So अगर suppose वो एक AUP हम कर रहे हैं किसी contract के तहत, जो मुझे creditors को suppose financial statements पे AUP करके देना है, so that will be dependent upon the requirement of that contract or that creditor. अगर कुछ भी नहीं लिखा है, तो general purpose financial statement preparation framework may be the best one to use, unless there is some reluctance or there are some caveats. So general purpose तो हम तभी बोल सकते हैं जब हमारा complete set of financial statements है. अगर हमने एक भी required note miss किया, तो वो general purpose नहीं होगा. तो largely AUP इस तरह की कोई भी चीजें होती है, तो वो special purpose में बनती है, unless they are giving all the information which are required for the general purpose. Yes, ma'am. Ma'am, another member is asking one query. There's one example. Suppose company A is a sourcing entity for an Indian MNC incorporated in country X and is 100% subsidiary of Indian company B. The warehouse and stock in them are only assets of the company and are located in country X. Okay. All the employees of company are also in country X. So what is the place of effective management, POEM, of company A? So that is not related to reporting at all. Yes. But still one member is asking, we will pass on to you, and if relating to that, we will forward the answer to the member. Okay. I'll see if it falls. So I think वो कुछ regulatory question पूछ रहे हैं. Yeah, that is. So I'm so sorry. I would like to say sorry right now only because I am not, though I'm a company secretary as well, but I am not practicing the law barring Companies Act. So you may pass it on to me, but I'm afraid I would be able to answer this. Yeah. Ma'am, another question is, there are two parts of the question. As an auditor, is it not required to report on going concern, especially where CARO is applicable? Even if CARO is not applicable, if going concern is affected, it should be mentioned in the main audit report or not? Sir, I would like to give the entire trail first and then would understand the question again. So going concern assumption is the fundamental thing for any company to follow and considered by the management and considered by the auditor. That is the first thing. So that is a deemed assumption that the company would be a going concern. So कई बार बोलते हैं ना कि जब तक कोई चीज प्लेस में नहीं होती तब तक वो ऑब्जर्व नहीं होती. So going concern होना is a mandate for a company. अगर वो going concern नहीं है,
So there has to be a specific mention, and before mention there has to be a specific evaluation by the management first. So ऐसे 570 बोलता है कि going concern assumption का evaluation has to be done by the management first and has to be re-evaluated by the auditor. So अगर कंपनी के पास या ऑडिटर के पास कोई कोई इंडिकेशन नहीं है कि कंपनी गोइंग कंसर्न नहीं है, then it is fine. But if the management has an indication that the company may not be a going concern in near future, or on evaluating by the auditor there is an indication that the company might not be a going concern, the reporting thereof has to be done. And जो reporting की buckets है वो ऐसे 570 revised हमें बताता है. एक होता है सबसे पहले closed call. If I can take time to elaborate those buckets, is it fine? Yes, madam, please. हाँ, so एक होता है मेरा closed call situation कि ऑडिटर को इनिशियली कुछ प्रॉब्लम्स दिखाई दी, मैनेजमेंट से बात की, लेकिन बहुत एपरेंटली पता चला कि अच्छा इनका तो कॉन्ट्रैक्ट है या इनके पास तो फंडिंग आने वाली है, तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी. दैट इज कॉल्ड एज कोल्ड कॉल, क्लोज्ड कॉल. सो क्लोज कॉल होता है कि प्रॉब्लम तो दिखी लेकिन इमीडिएटली दैट वाज सेटिस्फाइड विदाउट एनी एफर्ट्स बाय द मैनेजमेंट. उस केस में रिपोर्टिंग करना जरूरी नहीं है, बट अगर कंपनी को लगता है कि ऑडिटर को लगता है कि बहुत ही क्रिटिकल सा मैटर है, कोई भी देखेगा तो ऑब्जेक्ट करेगा, तो ऑडिटर उसको कैम में दे सकता है. अगर वो क्लोज्ड कॉल नहीं है, मटेरियल अनसर्टेनिटी है, लेकिन कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग मिटिगेटिंग फैक्टर है, तो हम उसे क्लोज्ड कॉल नहीं बोलेंगे. उसके लिए हमें एक स्पेसिफिक पैराग्राफ देना पड़ेगा आफ्टर द रिपोर्टिंग पैराग्राफ दैट मटेरियल अनसर्टेनिटी. लेकिन अगर उसके डिस्क्लोजर्स कंप्लीट है, एडिक्वेट है, तभी हम मटेरियल अनसर्टेनिटी पे पैराग्राफ देंगे. ना वो क्वालिफिकेशन माना जाएगा, ना वो ईएम माना जाएगा. लेकिन अगर मटेरियल अनसर्टेनिटी है और कंपनी के पास मिटिगेटिंग फैक्टर नहीं है या उसने डिस्क्लोजर्स एडिक्वेट नहीं दिए, तो कंपनी को इवैल्यूएट करना पड़ेगा कि एडवर्स ओपिनियन देनी है या क्वालिफिकेशन देनी. तो मेरे डिफरेंट बकेट्स में गोइंग कंसर्न की प्रॉब्लम आती है. अब क्वेश्चन अगर मैं समझी, अगर ठीक से आप मुझे बताइएगा कि वो ये कह रहे हैं कि ऑडिटर को गोइंग कंसर्न का इवैल्यूएशन करना जरूरी है और रिपोर्ट करना जरूरी है. यस, जरूरी है. लेकिन अगर एविडेंट है, पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड है कि कंपनी गोइंग कंसर्न है, तो मुझे अलग से अपनी रिपोर्ट में नहीं लिखना. कंपनी अपने प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो पहला नोट आता है उसमें लिखेगी, मुझे अलग से नहीं लिखना कि कंपनी इज अ गोइंग कंसर्न. मैं अपनी रिपोर्ट में तभी लिखूंगी जब एडवर्स होगा, नेगेटिव होगा या कोई डाउट होगा. आई होप आई एड्रेस दैट क्वेरी सर. Yes, madam. Madam, in case of audit of a high net worth individual who has prepared his general purpose financial statements comprising balance sheet and income, so can you guide us what precaution or what type of reporting is to be done in case of this? सर, सबसे पहले तो मैं ये समझना चाहूंगी कि अगर एक इंडिविजुअल है तो उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट जनरल पर्पस कैसे हो सकते हैं. एक इंडिविजुअल जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा है, मतलब वो अपनी बैलेंस शीट किसी को भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है. सर, जनरल पर्पस का तो मतलब यही होता है ना जी. तो अगर वो जनरल पर्पस है, मान के चलते हैं कि ठीक है, ही इज फेयर एंड ही इज ना हाई नेटवर्थ पर्सन एंड ही इज फेयरली प्रेजेंटिंग हिज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सो वो जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है. तो सेम लेवल ऑफ कॉशन जो एक जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए मुझे लगनी चाहिए वो मैं लगाऊंगी. बट आई रियली डाउट, क्योंकि इंडिविजुअल के लिए कोई फ्रेमवर्क नहीं है मेरे पास. वो सिर्फ आईसीआई के स्टैंडर्ड्स ही फॉलो कर सकता है जो नॉन कॉर्पोरेट एसएससीज के लिए हो सकते हैं. वही उसका जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट है. सो बीइंग एन ऑडिटर आई हैव टू मेक श्योर कि जो स्टैंडर्ड आईसीआई ने इशू किए हैं जो कि नॉन कॉर्पोरेट एसएससीज के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, वो उसको अप्लाई हो रहे हैं. बी इट cash flow, be it going concern, be it other assumptions which are used for preparation of the financial statements. So वो ऑडिटर की साइड से पूछ रहे हैं ना कि क्या प्रिकॉशन हमें अप्लाई करना चाहिए. जी. हाँ, तो उसको एटलीस्ट जो सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, क्योंकि और तो कोई उनका प्रिपरेशन फ्रेमवर्क है नहीं. उनका प्रिपरेशन फ्रेमवर्क तो सिर्फ स्टैंडर्ड है जो आईसीआई इशू करता है नॉन कॉर्पोरेट एसएससीज के लिए. उनको एस रूल्स तो लगेंगे नहीं, इंडेस लगेंगे नहीं. अगर वो वॉलंटरली बनाना चाहता है तो इंडेस में बनाएगा, तो इंडेस कंप्लाई करने पड़ेंगे. दैट्स इट. वो फ्रेमवर्क देखना पड़ेगा. Yes, ma'am. Madam, one question is relating to our revised SA 720 auditor's responsibilities relating to the other information. जी सर. In this case, generally other information is approved in the same board meeting in which the financial statements are approved. जी sir. In this case, other information will be made available only after the auditor have issued the audit report. बिल्कुल sir.
So how this is to be dealt with the other information section of the audit report? सर जब हमने ऐसे 720 अभी पढ़ा था तो उसमें बहुत सारे सिनेरियोज हैं. कई बार क्या होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपने बनाए और साथ साथ उन्होंने आपकी अदर इंफॉर्मेशन ड्राफ्ट बनाई और आपको दिखा दी. ठीक है. सो बट वो अगेन सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन अप्रूवल बाय बोर्ड होता है. कई बार वो प्रिपरेशन हो ही नहीं पाती, बना ही नहीं पाते. कई बार तो साइमल्टेनियसली होता है, इट हैपेंस. तो उस केस में वहां पे डिफरेंट गाइडेंस है स्टैंडर्ड में, जो हमने बात भी की थी कि आपके पास हो सकता है कि पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन बिफोर फाइनलाइजेशन ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट आ गई हो. ये भी हो सकता है कि उसमें से पार्शियल आ गई हो. ये भी हो सकता है कि कुछ नहीं आई हो और हमें ये भी पता है कि आएगी भी नहीं जब तक हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारे ऑडिट करेंगे या हम रिपोर्ट इशू करेंगे. सो उन सारे सिनेरियोज में वहां पे इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स दिए हैं स्टैंडर्ड में ऐसे 720 में. इफ यू लुक एट कि किस सिनेरियो में कैसे रिपोर्ट करना है, तो एक कैटेगोरिक स्टेटमेंट आता है जब हम ऐसे 720 का रिपोर्टिंग करते हैं कि रिपोर्टिंग ऑन अदर इंफॉर्मेशन पे कि बाय द रिपोर्ट टाइम और इशू ऑफ द रिपोर्ट this much of information related to other information has not been made available to us, and then we have to write what's next जो मैनेजमेंट उनको कमिट करता है. सो हमें लिखना होता है कि मैनेजमेंट हमें बाद में देगा या नहीं देगा, या देगा तो हम क्या करेंगे, वो सब हमें लिखना होता है. वो बहुत अच्छे से ड्राफ्टेड है 720 की इलस्ट्रेशन. Yes, madam. So now we come to an end, ma'am. Thank you so much for sparing your valuable time. Thank you so much. One last question, one more question is popping up. If you permit, it's a small question. Yes, sir. I'm here, sir. I'm here, sir. One member is requesting, can you put some light on the penalty for the non-compliance of this proper audit reporting? Sir, non-compliance will be dealt by ICI Code of Ethics and now NFRA also. If I am not, see, non-compliance may be in various sections I may bucketize. If I am supposed to issue the audit report, I am not doing, I am issuing the auditor's report, but that is not in compliance with the right test framework. So I have been telling since beginning कि आपका स्टैंडर्ड जो आप चूज कर रहे हैं, गाइडेंस जो चूज कर रहे हैं, इलस्ट्रेशन का टाइप जो चूज कर रहे हैं, वर्डिंग जो चूज कर रहे हैं, स्टैंडर्ड का नाम जो लिख रहे हैं, दैट हैज टू बी मोस्ट अप्रोप्रिएट. सो जैसे हमने बात की कि आप ऐसे 700 स्टैंडर्ड जो जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे लगता है और कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे लगता है, ऑडिट पे लगता है. अगर आपका रिव्यू स्टैंडर्ड रिव्यू एंगेजमेंट है तो आप उसको मॉडिफाई कर नहीं सकते. आपको फिर 2400 वाला है, अगर वो क्वार्टरली वाला है तो वो यूज करना पड़ेगा. आपका 800 की सीरीज है तो वो यूज करना पड़ेगा. सो आपने क्या गलती की है वो उस पर डिपेंड करेगा कि वो आपकी क्या प्रोफेशनल इनकॉम्पिटेंसीज बताता है या आप कौन से प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में फॉल करते हो, जो कोड ऑफ एथिक्स ऑफ आईसीआई या फिर एनएफआरए से डील होगा. Yes, yes. So thank you so much, ma'am, for sparing your valuable time, and you have covered almost all the standards of the series 700 to 799 relating to the audit conclusions and reporting and other standards where audit reporting is required vis-a-vis this auditing standards. Hope our members have gained a lot through your deliberation. Thank you so much once again for sparing your valuable time. Thank you so much for giving me the opportunity to share my views and do something for my professional colleagues in my own way. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you. Namaste. Namaste, sir.